Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare
यहाँ से बंद करना है, साउंड तो यहाँ से रहेगा। साउंड तो यहाँ से जा रहा है ना, तो वो अलग है, ये अलग है।
Shri
Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Balan Sakala Lalita Shri Vishakhantamsha Namo Krishna Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Virinale Namaste Saraswati Deve Gaurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Vachadri Sagadani Namo Mahavadanyaya Krishnaya Bhaktiraya Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Aurtuse Namah He Krishna Namah Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanjana Gaurani Shri Vrindavaneshwari Vishvanusute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhasya Kripa Sindhu Devacha Patiyam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauri Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So yesterday we were discussing, we'll continue the same discussion. So in 2.8.7, this is the question asked by Parishit Maharaj. That, O learned Brahmana, the transcendental spirit soul is different from the material body. Does he acquire the body accidentally or by some cause? Will you kindly explain this, or it is known to you? So he is asking and putting forward this question to Sukadeva Goswami. And then answering this question, Sukadeva Goswami in text number 2.9.1 to 2.9.3 he speaks. So initially this verse we discussed yesterday, that how actually there is no meaning of having any relationship with material body for the spirit soul. But then we see that how the spirit soul identifies with the material body because of the illusory energy of the Lord. And because of this identification, it appears that the spirit soul is one with the material body. And how this coupling takes place? With the medium of mind. So mind makes us identify with the material body, and then we feel that yes, I am this body only. And the analogy given to explain is like a person who is having a dream. So in the dream, very closely identifies with what is happening in the dream. Although in one way there is no relevance with what is happening in the dream to the actual person who is sleeping. But because of this identification, he feels that that dream is myself. The dream is connected to me. And because of this he suffers. So we see that in one way, whatever suffering we get in the material body is more because of identification than actually having their actual existence. I suppose you have purchased a new car and it is standing outside, and it is a very expensive car. Suppose it is a Mercedes and white color car, sparkling, and suddenly you hear a big sound as if some vehicle has hit against a car. And as soon as you hear this sound, suddenly you get a lot of fear in the heart that my car was standing below, something should not have happened to my car. And then when you come down and you see one white Mercedes is being hit by some other vehicle, then you feel very unhappy. Just now only I purchased a new car and suddenly how this happened. But when you come down, then you realize that there is another person who also had the Mercedes car, and just behind your car he has parked his car. Then you become very happy that it was not my car, it was somebody else's car. So the pain is happening because of identification. When you identify that this is my car, then you get a pain.
When you identify this car does not belong to me, this car belongs to somebody else, then you don't have any pain. So same thing Sukadeva Goswami is telling, that the effect of the body on the soul is perceived because of the identification of the soul with the body. In one way there is no effect, but because of so much identification there is effect. Like sometimes in a movie you go to watch a movie and you see in the movie some character or some scene is going on, and then there may be some tragic scene, hero may be going through a lot of difficulties. So although nothing is happening to you, but because of so much closely identifying with the scene, sometimes the audience also starts crying. In one way, they are paid heavily and they are doing good in their own places, and there is no actual relevance to what is happening, and there is no connectivity with you. But then still because of that identification you start feeling pain. So that is what it is mentioned here. Once one experiment was done. So that experiment was a very beautiful experiment. There was one board like this, and your hand is kept like this, and there is one artificial hand kept like this. Your hand is this and artificial hand is this. And then there was a person sitting there and he was doing like this to you. And then with another hand he was doing like this to the artificial hand. You understood? So when he is doing like this, you are feeling some feelings, right? And he is doing like this to artificial hand also. And suddenly he takes a hammer and hits the artificial hand. And this fellow says, "Ooh." But actually nothing happens to him. But why? Because he made whole arrangement in a way where he started misidentifying with the artificial hand. And he started thinking that this is my hand only. So when the hammer was put on the artificial hand, he felt as if I actually got a pain. But actually nothing happened. So because of this identification, which takes place where? In the mind. And because of this, he feels like that. One Amog Leela Prabhu was giving an example. Once what happened in a bus, one boy was going on, and then there was bus was jam-packed, so he was standing. And then behind, at one stop, one girl came. And this boy saw a girl coming, and the girl stood just behind him. So the boy started getting some feelings. And he was a Nakula group devotee, second year boys devotee. So he told, no, this is not good. I have been told by my superior, I should maintain healthy distance. And then, but he was also having a feeling that she is so beautiful. And see, my Lord's arrangement just behind me, she is standing. Now the bus is going on and suddenly the driver puts a brake. So then he gets a feeling that she is touching his body. So then he gets a feeling, no, this is not good. But then he enjoys those feelings that, hey, such a beautiful lady touching my body. Bhakti to karenge baad mein. पहले इसका मजा ले लेते हैं. She gets this feeling. So like that, 2-3 breaks he puts and he gets a feeling of having a nice touch with this lady. Then finally he gets a feeling, एक बार देख तो वो कितनी सुंदर है, इतना टच कर रही है मेरे को. He turns behind and he finds that there is another boy standing. So वो नालक ये कहाँ से आ गया? तो देखा उसने वो जो लेडी थी, जब वो चढ़ी थी तो खड़ी थी. तुरंत उसी समय पे पास में एक भैया बैठे थे, उन्होंने बोला था लेडी को कि आप बैठ जाइए बहन जी, मैं खड़ा था. तो जो उनको ब्रेक्स में टच मिल रहा था वो किसका था? वो भैया का था. लेकिन वो एंजॉय कर रहे थे. क्यों? हाँ, क्योंकि आइडेंटिफाई वैसा कर रहे थे कि कोई लड़की का टच है. But actually, factually, there is nothing like that. Factually, it was a boy. So Sukadeva Goswami says, actually, because of this identification, we suffer. So what happens for a pure devotee? Because he disconnects from this misidentification with the body. So although he is with the body, but he does not suffer because of the body. There is an example given like a dry coconut. We have seen in a dry coconut, the inside, the part, it separates itself from the coconut. And then when you vibrate the coconut, you can hear tuck, 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 tuck.
Same way, a pure devotee who is self-realized can understand himself as a soul separate from this body. And that's why, although he is inside the body, although body may go through vikara, but he does not feel pain. Another irony in the material world is, someone may say, so what is wrong, Prabhu? I will identify with the body only. But point is, body is material. If you identify with the body, then the body being material, it will go through 6 transformations which matter goes through. So the body will take birth, the body will grow, body will maintain, body will produce byproduct, body will dwindle, and body will die. Now if you identify with matter, which naturally is supposed to go through this transformation, then what will happen to you? You will suffer, because this change will give you pain. Is it not? Now you see, when Krishna in Bhagavad Gita is defining the change of the body, what kind of example Krishna gives? He brings out the transformation of the body or the transmigration of the soul from one body to another to a level as if it is not a very big event, as if it is a simple thing only. Krishna is telling, just like you change dress, you change body. Now you see, it is from our point of view, it is a big thing, right? Living one body and then going to another body. But from Krishna's point of view, he says, just like we change dress. So do we feel a pain when we change the dress? No, because we don't identify with that dress. We know that this dress is separate from me. It is for some purpose which I take it, and then after some time I remove it. But in case of body, we feel so much pain. Why? Because we so closely identify with it. It is mentioned in the scriptures, when a person dies, he gets a pain of 10,000 scorpion. And why this pain comes? 10,000 scorpion pain. Because so much closely soul identifies with the body. So when the body, soul comes out of the body, and how the soul comes out of the body? Because soul is spiritual in nature, so you cannot catch soul and bring out of the body. So what happens is, when Yamdutas they come, they bring subtle ropes. And by those subtle ropes, they bind the subtle body. Right? Because gross body, though, they don't want to take. Gross body will remain here. Soul they cannot touch. So they come and they bind the subtle body. And then they force the subtle body to come out of the body. Now the soul so much closely identifies with subtle body. And mainly the mind and ego. So when the soul so closely identifies with the subtle body, and when that subtle body is being taken out, then soul also comes out. And in the process, the soul experiences a lot of pain. Why? Because that pain is experienced in the subtle body. The pain is not experienced in the soul. You understood? When subtle body is being taken out by the Yamdutas, so mind is crying, because mind does not want to leave this body. Mind is crying, what is this? I want to be in this body only. Why you are forcing me to come out? But the Yamdutas, with the force of the ropes, they drag him out. And soul is identifying with the mind, closely with the emotions within the mind. And that's why soul also suffers pain. And pain to extent that 10,000 scorpion. Can you imagine what degree of pain? But it is very special. The moment soul comes out, then he finds that I am out of this body, and then the soul is taken to further journey. So why Prashit Maharaj is asking this question, and why Sukadeva Goswami is giving answer to this? Generally what happens, because of not understanding this, that we are not this body, we are soul. So most of our time, most of our consciousness goes in thinking about the body only. See, in the bhakti, we don't say that we don't have to take care of the body. Body being a very good instrument, especially a human body, should be taken care, and the body belongs to Krishna, so should be taken care. But because of this attachment and identification, we are so much absorbed in the body. And what happens because of this absorption in the body, we fail to take care of the soul. Like how many times we take prasadam? 3 times we take prasadam, right? अगर उसमें सब्जी में नमक थोड़ा कम है तो तुरंत ऑर्डर देते हैं, राइट? प्रभु थोड़ा नमक लाओ, नमक नहीं है सब्जी में, करेक्ट? या थोड़ा सा भी इधर होगा, हम तुरंत फीडबैक देंगे. बट हाउ मच वी टेक केयर ऑफ द सोल? जब में नमक कम है, ज़्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ता. हो गया प्रभु जी आज का 16 वाला,
प्रभु आपको नहीं बहुत आ रहा था, हो गया प्रभु जी, कंप्लीट हो गया, अभी छोड़ दीजिए। सोल को हम ब्रेकफास्ट खिलाते हैं, वो ब्रेकफास्ट भी कई बार अच्छी तरीके से नहीं खिलाते हैं, करेक्ट, एंड वी डोंट वरी अबाउट इट, करेक्ट। बट बॉडी के लिए हम कितना टेंशन लेते हैं, थोड़ा सा भी गर्मी ज़्यादा होता है, पंखा चलाओ, करो, दरवाजे खोलो, कूलर लाओ, लगाओ, करेक्ट। थोड़ा सा भी अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है, थोड़ा सा फीवरिश हो गया, तुरंत तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सब देखिए। लेकिन आपका हो सकता है 2 महीने से जब अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप किसी से कंसल्टेशन नहीं करेंगे या एनालाइज नहीं करेंगे, रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे। So that's why Sukdev Goswami is telling that if we identify too much with the body, then we cannot work for the soul. That's why the scripture, such analytical study is being done and is being mentioned, so that we can at least logically understand that we are not the body, we are soul. And then slowly when we engage more in the activities of the soul, and slowly we come to this understanding also that actually I am soul, I am not this body, I am different from this body. So that's why he is speaking this. And then we discussed the text number 2. This also we recited right now. Text number 2. Yeah. So now what happens is he is extending the identification. He says that the living entity appears in so many forms offered by the external energy of the Lord while enjoying in the modes of material nature, and the encased living entity misconceives thinking in terms of I and mind. Now you see in the scriptures there is a mention that there are 5 kinds of putra. कितने प्रकार के पुत्र हैं? So there are many kinds of putras, 5 kinds of putras are mentioned. Now generally any boy takes birth to any family, generally parents they become very attached to him, right? But it is mentioned in the scripture, sometime there may be a hardcore enemy of yours and whole life is meditating, somehow or other I have to create some problem for him, and remembering this with lot of hatred and enmity for you, he takes birth as your son only. He is a hardcore enemy, he died thinking to do some harm to you, and always he was absorbed in your thoughts, and then Krishna makes arrangement because you are also supposed to have some suffering. Now he becomes your son. Now same enemy in previous life you were having a lot of hatred for him. Now same person comes as your son, you have a lot of attachment for him, you have a lot of love for him, although he has come with a purpose to destroy you. वो आपके पूरा पैसा लेगा बिजनेस का और बिजनेस पूरा उड़ा देगा. But then we have a lot of attachment by I and mind, right? Sometimes you have seen some ladies, they marry to a person with ulterior motive, but the person so closely identifies that she is my wife, we got in relationship, right? And he showers a lot of love, and later on at right time then she creates a problem for him, or she arranges some situation by which he is put into a difficult situation, isn't it? So we see that how this identification extends, and then we develops this aura, and then we misidentifies. So initially we more connect with our body, and then things connected to the body. Then whatever happens to things connected to body, they also become source of our happiness and distress. So you see how much we suffer and enjoy in the material world because of identifications only. And suppose now you get information, suppose you are from Raebareli, and then you hear a news, Raebareli में भूकंप आया है और भूकंप का एपिसेंटर है विमान नगर, and suppose आप विमान नगर के तुरंत आपके हृदय में डर बैठ जाएगा, राइट? तुरंत मम्मी को फोन करोगे, मम्मी जिंदा हो कि नहीं हो, सब ठीक है कि नहीं है, मैं सुना कि अर्थ का आया है. फिर आपको नहीं बोलती, नहीं नहीं बेटा वो दूसरा विमान नगर में आया है, हमारा वाला विमान नगर में नहीं आया है, तो तुरंत आप खुश हो जाओगे, करेक्ट? कि we are not affected by the situation. So one thing is, if we very much grossly misidentify with the body and things connected to the body,
then what happens is we cannot give importance and time and work on the activities of the soul or the purification of the soul. Second thing what happens is when we so much misidentify the things of this world and body, then so much of our time goes in satisfying them. So much of our time goes in taking care of them. Especially in Kali Yuga you will find is a very special age in Kali Yuga. Even a person who is very poor, he is so busy. If you go and ask him that, sir, can you please come and chant holy names? Are time ka hai? Why? Because everyone is busy in taking care of their body, taking care of things connected to the body, and they have no time for spirituality. And when you don't give any time for spirituality, when you give all the time only for material things, then the interest for spiritual life also goes down. So what Maya Devi does is, first she takes time from you. And when you give that time to Maya Devi, then your interest in spiritual life also goes. So His Holiness Ramnavami Swami Maharaj says that Maya Devi will come in your life and she will say, just give one moment to me. And she will enter and then she will expand that one moment into one life. And when you give that one moment to material energy, she will make you so much busy in material activities, then your interest for spiritual life also will go. So why now no one has any interest for spirituality? Because they are so busy in material activities. If only they can give some time for spiritual activities, then they will develop interest for spiritual activities. Why in the Vedic time people had interest for spiritual activities? Because they would take part in spiritual festivals. They would take part in hearing Ramayana Katha. They would take part in Dasara festival. Now, when people are not giving any time for spiritual activities, then how can they have any interest for spiritual activities? And that is how Maya bewilders them. So a person becomes so busy in satisfying things which are connected to this body. Like this. And then what happens is, time goes and then interest also goes. So, Srila Prabhupada in that lecture was quoting this verse. So this is from Bhakti Rasamrita Sindhu, this verse, very beautiful verse. Kamadinam katina katita palita durnidasas. Kamadinam katina katita palita durnidasas. Tesham jatamaina karuna trapano pushanti. Tesham jatamaina karuna Utsrachetanatha yadupate sampratam lapta buddhis. Tvam ayutaha saranam abhayam mam nyukans atmadasya. So this Srila Rupa Goswami is explaining in Bhakti Rasamrita Sindhu that a person becomes so much affected by the demands of the body, demands of the senses, and then he works very hard to satisfy them. So he is telling there is no limit to the unwanted orders of lusty desires. So someone may say, sir, इसमें problem क्या है? मैं demand satisfy करूँगा अपने senses की. The point is there is no end. You satisfy one desire, they will speak four desires. Right? Like initially wife will tell husband, तुम्हारी अच्छी नौकरी होनी चाहिए, क्या कर रहे हो यहाँ पर? उनको देखो, गुप्ता जी को देखो, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, शर्मा जी को देखो, बैंक में मैनेजर बन गए, और खन्ना जी को देखो, फैक्ट्री खोल दिया है, और तुम क्या कर रहे हो? कुछ करो, अच्छा जॉब लो, और फिर जब अच्छा जॉब मिल जाएगा, फिर उसकी डिमांड और बढ़ जाएगी. कितना पुराना घर है, तुम्हारे दादाजी ने बनाया था, रात में सोती हूँ तो डर लगता है गिर नहीं जाएगा. नया घर होना चाहिए. गुप्ता जी को देखो, अभी अभी नया बंगलो बनाया, उनको देखो, फिर आप बंगलो बनाओगे, फिर बोलेगी देखिए अभी भी हम मारुति सुजुकी की कार में जाते हैं, अभी किया आ चुका है, होंडा ही आ चुका है, और तुम क्या अभी तो टेस्ला आ रहा है, और तुम टेस्ला लेके क्या कर रहे हो? टेस्ला आना चाहिए जो ऐसे खुलेगा गरुड़ की तरह. So then there is no end, correct? So same thing is telling that there is no limit to the unwanted orders of lusty desires.
Sometimes new people when they hear these kind of verses they feel प्रभुजी क्या ambition होना गलत है, क्या हमारी इच्छाएं नहीं हो सकती हैं, भौतिक इच्छाएं हो सकती हैं, लेकिन शास्त्रों में क्यों इतना वार्न किया गया है कि वो भौतिक इच्छाओं के अगर आप पीछे जाओगे तो भक्ति नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका एंड नहीं है और वो मल्टीप्लाई होती हैं. All desires are like seed. So when you put one seed, what happens? It fructifies into a plant. And then what happens? So many seeds come. So many fruits come, right? Same thing happens to any desire which we may fulfill. Initially it will be one desire. Just take a job. Then you will find it will manifold into many other desires. So he is telling, oh my dear Lord, there is no limit to unwanted orders of your lusty desires. Okay. Then he is telling, although I tried so much to satisfy my lusty desires, I worked very hard and I rendered so much service, but they have not shown any mercy to me. Why they have not shown any mercy to me? They never became happy only. You will not find your body saying that, अरे सर आप 20 साल से मेरे को ब्रेकफास्ट लंच डिनर खिला रहे हो, अभी 5 दिन के लिए ब्रेक दे दो, मुझे नहीं चाहिए आपकी सेवा. ऐसी बॉडी बोलेगी आपकी? एक दिन भी ब्रेक देने के लिए तैयार नहीं. एक दिन तो छोड़ दीजिए, एक टाइम का ब्रेक देने के लिए तैयार नहीं. ब्रेकफास्ट खाया, लंच में फिर भूख लग गया, लंच खाया फिर डिनर में भूख लग गया. और कलियुग में तो और महान बॉडी है, बीच बीच में भी भूख लग जाता है, करेक्ट? बीच बीच में भी मन करता है. You will not find that body becoming happy. Same way you find regarding sleep. It will never happen. Your body will say, कितने सालों से तुम सो जाते हो रात में, अभी आज मत सो, बहुत हो गया अभी, आज उतना मेरे को अपना दीजिए. So you will find it, they will never become happy. And he is telling, I have not been sent to serve them. तो ये क्या बता रहे हैं कि ना तो मेरी इंद्रियां मुझसे खुश हुई है और मैं भी इतना सेमलेस हूँ कि मैं भी जो है उनकी इतनी ज़्यादा सेवा कर रहा हूँ, लेकिन उससे मैं असेम फील नहीं कर रहा हूँ. Nor have I ever desired to give them up. और मेरे को पता है कि ना मुझे संतुष्टि मिल रही है, ना इंद्रियों को संतुष्टि मिल रही है, फिर भी मेरे मन में उनको छोड़ने की इच्छा भी नहीं आ रही. That is how material energy is. She will keep you busy, she will make you suffer, and she will not allow you to give up. अच्छा है ना? She will keep you busy. अगर आप पूछोगे लोगों से, अरे आप क्या समय निकालिए भक्ति के लिए, सर समय कहाँ है? तो आप उनसे पूछिए तो आपको क्या मिल रहा है जो भी आप कर रहे हो? सर क्या करें, बहुत दुख हो रहा है, इधर दुखी है, उधर दुखी है, वो दुखी है. तो छोड़ते क्यों नहीं? सर क्या बात कर रहे हैं, कैसे छोड़ सकते हैं दुख को? There was a person in कानपुर who came. तो अगर आप ISKCON कानपुर मंदिर में आएंगे तो बड़े पिलर हैं प्रभुपाद जी के दोनों साइड में, कितने मोटे मोटे. तो एक बड़े पिलर के पास में से बैठ के वो रो रहा था. I was taking darshan that time, so seeing him crying, I just went to him. So I asked कि क्या हो गया आपको? तो फिर और तेज से रोने लगा कि बोले बहुत मैं एंजाइटी में, बहुत टेंशन में. तो मैंने उनको पहला चीज़ बताया कि देखिए ऐसा मत सोचिए कि आपकी ज़िंदगी में दुख है. इस दुनिया में हर किसी की ज़िंदगी में दुख है, तो थोड़ा सा उसका दुख कम होगा. फिर जो है वो बताने लगा कि सर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है. उसको खास करके अपनी पत्नी से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था. तो मैं उनको बोला छोड़ दो. मैं सर छोड़ कैसे सकते हैं? तो मैं कहा फिर ठीक है दुख भोगते रहो. मैं सर दुख तो ज़्यादा हो रहा है. मैं कहा छोड़ दो. तो सर छोड़ कैसे सकते हैं? मैं कहा भोगते रहो. तो सर लेकिन दुख भोगा नहीं जा रहा है, तो सहन नहीं किया जा रहा है. मैं कहा छोड़ दो. तो सर छोड़ कैसे सकते हैं? मैं पकड़े रहो. तो ये भौतिक दुनिया है. She will make you suffer, but you cannot give up also. And we see time and again, whole life till last breath, he is about to die. But उस समय पर भी वो भौतिक इच्छाओं को छोड़ता है. You might have heard that story, na, Akbar and Birbal, where Akbar told Birbal that anyways when someone becomes old, by that time he will not have any other desires because already he has fulfilled all his desires. And Birbal says, no, that is not the case. Even though person may have become old, but desires remain fresh. Desires don't die, desires don't become old. He says, how come? Then he says, I will show you. So then there was a person who was about to die.
And Birbal told Akbar, you can come along with your daughter also, and your daughter should come wearing the ankle bells. Daughter comes, and this person, he was so old that he was not able to lift his eyelids also. In order to see, some person was required to lift his eyelids. So now Birbal comes and Birbal says, so and so, Shahjahan Akbar आए हैं. तो फिर भी उसकी आंख बंद है. कौन आया है? अरे अकबर आए हैं, सम्राट. और बहुत हमारा सौभाग्य है, अकबर जी आए हैं. फिर बीरबल जो है जाके उनके आईलिड्स खोल के दिखाता है, देखो नजर करके. फिर वो बैठ जाता है. फिर बीरबल अकबर को बोलते हैं, आप बैठ जाइए और अपनी बेटी को बोलिए आने की. जब उनकी बेटी आती है तो आवाज आती है, छन छन छन. तो ये ऐसे करके लेटे होते हैं, तुरंत इनका मुंह इस साइड हो जाता है और आगे. बीरबल बोलते हैं अकबर को, देखा बुढ़ो की आगे बढ़ गई. आप देखोगे प्रभुपाद जी was in New York, and Prabhupada saw old people, very old, entering night pub, night bar. Prabhupada started crying that these fellows have become so old, but still they cannot give up this desire to see naked ladies and enjoy with them. Because it's not possible. Senses will not leave you. The same thing is telling, neither I am becoming ashamed also. So much I am trying to take care of them. Nor the senses are merciful upon me that they are giving me retirement. Nor I am developing a desire to retire. So that's why it is mentioned in scripture that Brahmana Brahmate Kaun Bhagyavan Ji Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Peace. That the most fortunate person in the world is who gets the mercy of spiritual master and Krishna by having this Bhakti Lata Peace. So only by the interruption of the devotee we can come out of this. Otherwise it is very difficult. Like Karishan Guru says, to make a devotee means you have to knock out the electron from its orbit. अब देखिए वो इलेक्ट्रॉन है इतना ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है. Is there any chance for electron to come out on its own? No. But when a devotee externally comes and then takes out that electron from its orbit and then puts him in the another orbit where Krishna is the center, then only it is possible. Otherwise, people will live and people will die, people will continue suffering, people will keep taking bodies, but they cannot deliver themselves. Even though people may have scriptures, still they cannot become devotees if a devotee does not come in their life. So there is one devotee, a disciple of Prabhupada, Shyam Sundar Prabhu. So he has written one book, Chasing the Rhinos. So in that book he writes that how before we came to India, already so many Indians they had Bhagavad Gita, this Gita press Bhagavad Gita. But still they were not becoming devotees. Although they were reading scriptures, although they had scriptures, generally in India now also every house will have some scripture at least, right? Either Ramayana or Gita or something. But still they were not becoming devotees. Why? Because there was no devotee to help them. Even though you have scriptures, still one will not become devotee. Because you need a devotee to help them. And when we see them, they come in touch with some devotee, then they understand. Generally in India they have a kind of conception. Scriptures means, you bring a red cloth and then put the scripture in the red cloth and bind it up, then put a thread also and then do like this. So in my home I would always see there was one book which was always kept in the red cloth in our almirah where our altar was. And from my childhood I had a conception, ये किताब को खोलना नहीं चाहिए, खोलेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको हमेशा लाल कपड़े में बंद रखना चाहिए. So जब भी कुछ मार्क क्लीनिंग होता था तो मैं ऑल्टर को साफ करता था, तो मैं उस किताब को ऐसे खोलता था, साफ करता था, जल्दी से फिर बंद करके उसको रख देता था. Generally that kind of conception we have in India. But when we meet a devotee of the Lord, then they teach us, भैया इसको खोलो, right? And you read it out. So he is telling that neither my desire to
give them up is awakening. Then he telling, but now, however, my intelligence is awakened due to transcendental intelligence. So whenever this comes like due to transcendental intelligence means they are blessed by some devotee of the Lord. In scripture you will find whenever someone got any mercy of the Lord, then some blessing of some devotee has come in their life. Like about Nirga also, yesterday I was speaking, that how one devotee blessed in Nirga, that soon you will have darshan of the Lord. So although he was caught up in Karma Kanda, in the act of giving charity, and because of which he became a lizard, but Krishna personally came to give darshan. Why? Not because of his charity, but because of being blessed to a devotee of the Lord. Same way we hear about Prabhupada Maharaj, in one Purana story comes, that Ambrish Maharaj gave association to Prabhupada Maharaj in heaven. And because of that association, he came to this understanding that what I am doing is useless. And then he came to fold of devotional service. If someone is thinking if I keep doing material activities and then I will come and have a realization, it is very difficult. When Sugriva, he comes and then he becomes infatuated after getting a Kirtan. And then he starts enjoying with all his wives. And he forgets the promise given to Lord Ram. And that time Lord Ram, when he sends Lakshman, and Lakshman in anger, he comes. And then Sugriva was feeling very afraid that how I can go and face Lakshman. So he tells Tara that you go and speak to Lakshman. So when Tara goes and says, so she says that Lakshman, you know the nature of sun's gratification. And he's a monkey. Great sages, they forget and they fail to keep track of time. Then she gives example of Vishwamitra Muni, that when he fell down to Manika, for 10,000 years he remained with Manika and he felt that only one day has passed. How many years passed? 10,000. और उनको क्या लगा? सिर्फ एक दिन गया. So Tara is telling that see the nature of material sense gratification. How time goes, he don't come to know. And he becomes so absorbed and caught up in that you can't see anything else. You can't see that where you are going, what will happen to you. Like this. So transcendental intelligence means that some devotee blessed. Now he is telling, now I want to refuse the unwanted orders of these desires. Now I want to surrender to your lotus feet. So please engage me in your personal service and save me. Very beautiful verse. So this is from Bhakti Rasa Sindhu. 3.2.25. Now some devotees, after hearing the philosophy, after coming in touch with devotees, they may start devotional service, but it is not easy to continue devotional service. Why? Because for so many lives we were engaged in activities of satisfying our senses. Now, by some fortune in this life, we are trying to practice spirituality. So naturally, the old vasanas, the old samskaras, the old conditionings, the anarthas, they will try to drag us down. And we have to say no to it, and we have to continue practicing spiritual life. So it's not easy. That's why those who come to devotion service, initially, especially in the time they become stable devotees, they have to go through a lot of challenges in life. Like Nakula group, all of you are. So currently all of you would have to face many challenges. But slowly if you continue and you take timely help from devotees, you are maintaining a good sadhana, regularly you are reading Prabhupada books, you are trying to chant very nicely, then Krishna will give mercy to you. Then although there are challenges, although there are difficulties, but still you will be able to continue and make progress. So one should know that whatever it may be, although it is difficult initially for me, but it is the greatest fortune which has taken place, and it is the greatest opportunity for me, where in a human form of life I got this opportunity to practice spirituality. Otherwise we see this trap of material senses is so much that we don't understand only that we are trapped. Now when we come in association with devotees, then we get some understanding that actually I was trapped to suffer and to keep suffering. So
So now we should take advantage of this opportunity and we have to see that we safeguard ourselves. So Prabhupada says, when you do a good morning program, then that is like a protection shield. चाहे वो बहुत मीठा या चवनप्राश के एग्जाम्पल आते थे ना, छी एंड वन और आ जाता था, प्रोटेक्शन शील्ड, राइट? वैसे ही आपका मॉर्निंग प्रोग्राम जो है माया के प्रति क्या है? प्रोटेक्शन शील्ड है, क्योंकि माया अटैक करेगी एंड इन अ न्यू स्टेज फॉर अ न्यू डिवोटी देयर आर लॉट ऑफ अट्रैक्शन फॉर माया आल्सो, करेक्ट? तो अगर माया के प्रति अट्रैक्शन भी है और माया सामने आएगी भी, तो अगर भगवान की कृपा नहीं है तो आप उसको मना नहीं कर पाओगे, राइट? सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्टडीज आल्सो नाइसली, बिकॉज एनीथिंग हैपेंस इन योर लाइफ, your mind will blame your spirituality on. If your marks come down, what mind will say? कर ले, 16 माला करना था ना, कर ले, हो गया ले। अब एक पेपर में फेल है और ऐसे ही करता रहेगा ना तो सारे पेपर में फेल हो जाएगा। मना करता हूँ भक्ति नहीं कर, भक्ति नहीं कर, लेकिन हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कर, ऐसा करके बोलेगा। या आपका हेल्थ डाउन आएगा तो फिर माइंड ब्लेम करेगा। बोला था ना 4 बजे सुबह खड़ा हो जाता है, खड़ा हो हरे कृष्णा संसार था, ये हो रहा है दावा, देखो खाना नहीं पच रहा है, पचेगा कैसे? इतना जल्दी खड़ा हो जाता है, समय चाहिए ना पचने के लिए। अब क्या कितना तंदुरुस्त था तू जब भक्त नहीं था, अब देख कैसा हो गया, आते निकल रही, हड्डियां दिख रही। कुछ भी होगा तो किसको ब्लेम करेगा? माता पिता के साथ कुछ हो गया तो ब्लेम करेगा, अरे लोगों ने डिटैचमेंट के टाइम पे क्या सिखा दिया मेरे को पता नहीं, माता पिता को मैं ध्यान नहीं रख पाया, माता पिता ने इतना कुछ किया मेरे लिए, लेकिन ये रोज सुबह डिटैचमेंट करते थे। अभी देखो मेरी माता पिता कितनी बुरी अवस्था में। तो if you are not practicing nicely and taking care, then you will find that for everything your mind will blame Krishna. So initially we should take care of other parameters also. Why? Because we are not so pure. So take care of your studies also, you take care of your health also, you take care of your parents also. At the same time, give priority to spiritual life also. So if you are taking timely help of devotees, then they will give you timely guidance, they will give practical guidance to help you. And if you continue like this with help of devotees, like a new child, when a parent they teach him to walk, you will find he falls, is it not? Why? Because it takes time for him to learn. But if he is not leaving the hand of a father, although he may fall, but he does not get hurt. तो हर्ट क्यों नहीं होता है उसको? फॉल तो होता है क्योंकि ऊपर से पिताजी पकड़े हुए, वो नीचे गिरे उससे पहले पिताजी और ऊपर उठा लेते हैं। देखा आपने? ऐसे करेंगे, जैसे ही गिरेगा वो और ऊपर उठा लेंगे। तो वैसे ही भक्त लोग करेंगे, लेकिन अगर आपने हाथ छोड़ दिया तो हर्ट होगा, फिर आपको लगेगा कि मैं चलूंगा ही नहीं। बट अगर टाइमली हेल्प लेंगे आप लोग तो आप देखेंगे धीरे धीरे करके इन टाइम टू कम यू विल बिकम वेरी नाइस डिवोटीज एंड यू हैव टू परफेक्ट योर लाइफ। और जब आप भगवान के धाम में जाएंगे उस टाइम पे जो विष्णुदूता जाएंगे वो आपका गुणगान करते हुए आपको लेके जाएंगे, तो वो बताएंगे कैसे तुम नकुल ग्रुप में कितना संघर्ष करते थे, कैसे तुमको इतना डिफिकल्टी होता था लेकिन तुमने छोड़ा नहीं। फिर आप बोलोगे हाँ वो तो है, बहुत डिफिकल्टी हुआ लेकिन छोड़ा नहीं मैंने। और फिर मैं 3rd ईयर में ये किया, 4th ईयर में फिर मैं ऐसे भक्त बना और आज देखिए आप लोगों के साथ जा रहा हूँ। और फिर जब ब्रह्मलोक से जाएंगे तो ब्रह्मा जी फूल बरसाएंगे, मानना पड़ेगा भैया धन्यवाद का जीव भगवान के धाम जा रहा है, एक्स्ट्रा फूल आप पे छोड़ेंगे। We have a great fortune, at the same time it is not easy. प्रभुपाद जी बोलते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ इज सिंपल बट इट इज नॉट इजी। कुछ जगह प्रभुपाद जी बोलते हैं इट इज इजी एट द सेम टाइम इट इज डिफिकल्ट। सो इन वन वे इट इज इजी इफ वी आर सिंपल एंड टेक एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, बट इट इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ आवर माइंड, बिकॉज ऑफ कंडीशन नेचर। सो वी लैंड हियर। हरे कृष्ण। Anyone has anything to ask? Then they can ask. अच्छा ये डिस्कनेक्ट हो गया तो ऐसा
ऐसा ही कुरान में आता है, गोतन सरस्वती महाराज बता रहे थे कथा में, मैंने पढ़ा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कि स्वर्ग में गए वो तो घूमते थे ना उस जमाने पर, राजा तो कहीं भी चले जाते थे। उस जमाने में तो जो देवता लोग हैं युद्ध करने के लिए राजा को बुलाते थे पृथ्वी से, दशरथ महाराज को भी बुलाते थे, आप आइए युद्ध कीजिए हमारे ब्याह। ऐसा भी नहीं है कि सोल सेटल बॉडी के अंदर है, सोल तो स्पिरिचुअल है, लेकिन सोल सेटल बॉडी से बहुत आइडेंटिफाई करती है। जैसे कि मानो आप क्रिकेट के प्रति बहुत अटैच हो और यहाँ पर एक टीवी लगा है जिसमें क्रिकेट मैच चल रहा है और इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, और कोई भक्त आता है पीछे से उस टीवी को उठा के दूसरे रूम में लेके चलने लग जाता है, आप अपने आप ही दूसरे रूम में चले जाओगे, क्यों? हाँ, तो वैसे ही वो सेटल बॉडी को लेके जाते हैं, वो सेटल बॉडी से इतना आसक्त है वो भी चला जाता है, सोल भी चला जाता है। कार्मिक इन द सेंस कर्मा से मिली है, सेम रहती है, राइट। नहीं, ऐसा कहता है, देखिए आप एज ए जीवा आप रिस्पॉन्सिबल होल्ड होते हैं, क्योंकि जो भी है सेटल बॉडी है, ग्रॉस बॉडी है, आपकी इच्छा के कारण ही आपको मिली है, करेक्ट? और आपके अंदर में फ्री विल तो है, तो इसलिए कर्मा जो है उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल होल्ड करते हैं, लेकिन उस कर्मा को आप एंजॉय और सफर करते हैं सेटल बॉडी ग्रॉस बॉडी के माध्यम से। हाँ, मूल इच्छा सोल की होती है और उस इच्छा को सेटल बॉडी के माध्यम से सोल जो है एंजॉय करने का प्रयास करती है। राइट, सेटल बॉडी जो है वो ग्रॉस बॉडी और सोल के बीच में है। जैसे कि आपने गुलाब जामुन खाया, गुलाब जामुन तो मैटर है, अभी मानो अगर मैं आप उस गुलाब जामुन को सुखा के उसको अर्थ वाटर फायर एयर ईथर में बांट दूँ, आपकी प्लेट में परोस लोगे गुलाब जामुन खाएंगे तो आपको आनंद आएगा। वही अगर कंबाइन करके जब गुलाब जामुन रखा, अब उस गुलाब जामुन को जब मैं ग्रॉस बॉडी में डाल रहा हूँ तो ग्रॉस बॉडी भी मैटर है, गुलाब जामुन भी मैटर है, तो कोई आनंद है नहीं। लेकिन माइंड जो है वो उसमें आनंद जो है उसको क्रिएट करता है, आप जामुन देखो ऐसा करके, और आत्मा जो है माइंड से आइडेंटिफाई करती है, तो इसलिए फिर जो है आपको आनंद आता है। तो उसकी जो फॉर्म होती है, जैसे हमें जो ये हमारी बॉडी है तो उसको पूरी बॉडी को कवर की हो सकती है। राइट राइट, जब हम चीटी बनेंगे तो चीटी जैसा शटल फॉर्म रहेगा शटल बॉडी का। राइट, ऐसा नहीं है, ये शटल है, इसका ऐसा नहीं है कि पहले 4 मीटर का था 2 मीटर हो गया, ये सब नहीं है। वो तो क्या रहता है, पहले आपकी शटल फॉर्म क्रिएट होती है, जैसे अभी हमारा ग्रॉस तो ह्यूमन फॉर्म है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका शटल फॉर्म भी ह्यूमन फॉर्म है। अभी भी शटल फॉर्म जो है हर मोमेंट पे चेंज होता है, जैसे आपके डिजायर हैं, जैसे आपके कार्य हैं, ऐसे चेंज होता रहता है। तो जो शटल फॉर्म है उसी से आप माया देवी को ऑर्डर दे रहे हो कि अगले जन्म में देख लो मैं कैसा बॉडी चाहता हूँ। डेली आप ऑर्डर दे रहे हो, हरे कृष्णा माया देवी मेरे दोनों हाथ थोड़े छोटे करो, देखो मेरे दोनों पैर भी थोड़े छोटे करो, पीछे से कमर को झुकाओ। फिर जैसे ही आप ये छोड़ेंगे तो आपकी नई ग्रॉस बॉडी रेडी। टिप ऑफ ईयर, ऐसे जो माइंड है तो ऐसा बिल्कुल ये शटल है, ये शटल है। सोल का भी देखिए वो हम एक साइज बताते हैं समझने के लिए, ऐसा है कि सोल है वो इतनी छोटी है, उसका ये साइज है, बट एक तरीके से आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते सोल को। बट आचार्यज एंड स्क्रिप्चर्स दे हैव टोल्ड अस टू अंडरस्टैंड समवट। एग्जाम
उसकी मतलब एक प्रेजेंस में हर जगह प्रेजेंस है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन अगर कोई उसी चाहे तो वो हर जगह उसी चाह में पहुँच जाए। वो तो आप भी जा सकते हो, आप यहाँ बैठे हो अमेरिका जा सकते हो, मन तो जा सकता है ना आपको अमेरिका, मन जा सकता है लेकिन मन शटल बॉडी चलेगी। सोल को कैरी किए हुए और तीन चीज़ों के बोलना। हाँ तो वही जो बताते हैं ना, जैसे ऋषि यहाँ बैठा है और वो अपना मन कहीं भी लेके जा सकता है। अब यही फर्क है कि उसके पास में नियंत्रण रहता है अपने मन के ऊपर, तो वहाँ जा भी सकता है, वहाँ कुछ चीज़ों को देख भी सकता है। हमारे केस में वैसा नहीं रहता, लेकिन हमारा भी मन आप देखिए कितना तेजी से कहाँ कहाँ चला जाता है, करेक्ट। उनके अंदर वो शक्ति होती है। आना यहीं पर है, मतलब योगी है वो माइंड से चला गया, नहीं, अगर योगी है तपस्या वगैरह करके तो पैर लोग, तप लोग, जल लोग यहाँ चला भी जाता है। मेरा मन ये रहता है कि भक्ति भी अच्छे से करके मत पड़ा, माया तो नहीं करते। ऐसा ही करता है भौतिक दुनिया में जब रहते हैं, तो इसी तरीके से मन करता है कि भक्ति भी, क्योंकि इतना सिद्धांत सुना है, तो इतना सिद्धांत सुन के ये तो समझ में आ जाता है कि भक्ति जरूरी है, वरना बाद में यमदूता के डंडे पड़ेंगे, करेक्ट। लेकिन जो भौतिक आकर्षण है, जो भौतिक आनंद है, वो भी छोड़ने का मन जो है नहीं करता है। तो इसलिए क्या है, हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है भक्ति जीवन में। तो हमारे जो नया स्टेज है उसमें क्या करना चाहिए, कलियुग में प्रभुपाद जी से भक्ति में मार्ग जो है उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी है। क्यों? क्योंकि भक्ति में हम सेंस एंजॉयमेंट को डिनाई नहीं करते, भक्ति में सेंस एंजॉयमेंट को हम प्योरीफाई करते हैं। तो जैसे आपका मन करता है भौतिक वो करने का, तो आप भगवान के लिए कीजिए, अच्छा खाइए, लेकिन भगवान को पहले अर्पित कीजिए। नृत्य कीजिए लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए, कोई कार्य कीजिए भगवान की प्रसन्नता के लिए कीजिए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे करके आपका जो वो डिजायर है टू एंजॉय, वो भी प्योरीफाई हो जाएगा और वो सेवा में तब्दील हो जाएगा। आपका एंजॉयमेंट का है, भगवान को केंद्र बिंदु रखकर एंजॉयमेंट कीजिए। भक्ति में ही ये पॉसिबिलिटी है, अगर आप ज्ञान वगैरह मार्ग में जाएंगे तो उसमें ये पॉसिबिलिटी भी नहीं, और धीरे धीरे करके आपको साक्षात्कार होगा, इसमें आनंद नहीं है। भक्ति कर रहा है उसको पता चल रहा है कि मैं एडवांस कर रहा हूँ, क्योंकि पता करने का ये कारण ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान बढ़ेगा वैराग्य बढ़ेगा। और जैसे पूरा के टाइम में भगवान का भी स्मरण नहीं करता है, हाँ अंतर नारायण स्मृति, जैसे हम सोते हैं तो हमें सपने में पता चलता है हम भी हैं वो हैं, और सपने में अगर कोई सो गया और उसे पता सोने का जो टाइम होता है बॉडी लेके और सो गया, हाँ वो 6 घंटे का मृत्यु के समान है। हाँ तो उस टाइम पर हमें भगवान का स्मरण होता है, ठीक है। मृत्यु के टाइम पर भगवान का स्मरण होता है। हाँ देखो वो स्वाभाविक होगा। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था कि प्रभुपाद जी हाउ टू रिमेम्बर कृष्णा व्हेन आई स्लीप, तो प्रभुपाद जी बोले यू रिमेम्बर कृष्णा व्हेन यू आर अवेक, देन यू हैव टू रिमेम्बर कृष्णा व्हेन यू स्लीप। तो ऑटोमेटिकली होता है। जैसे अभी हमारा मन क्या भौतिक चीज़ों के पीछे भागता है, क्योंकि जैसे इन्होंने बताया वो बहुत सही है, क्योंकि मन के जैसे बुद्धि के स्तर पे हमको लगता है इसमें आनंद नहीं है, लेकिन मन के स्तर पे हमको लगता है कि इसमें आनंद है। इसलिए जब हम सोते हैं तो कौन सोता है? बॉडी क्यों सोएगी? वो तो मैटर है, हाँ माइंड तो सपने में माइंड तो देख रहा है सब कुछ, इंटेलिजेंस होती है। और 20वां सेक्शन में आता है बुद्धि सोती है। तो अभी सपने में रात को सोते समय बुद्धि तो सो गई, और बुद्धि में ये विचार था कि ये सही है ये गलत है, और मनन तो है भोग करना चाहता है। तो इसलिए सपने में आपको कितना भी गंदा सपना आ सकता है, क्योंकि मन को शुद्ध होने में समय लगता है। अगर आपके मन में ये विचार आ गया कि भोग नहीं है इस दुनिया में, तो फिर आप बहुत संतुलन हो जाएंगे, क्योंकि फिर बुरा इच्छा आएगा ही नहीं, मन ही रिजेक्ट कर देगा ना। अभी क्या होता है, मन स्वीकार करता है, अरे देखो कितना आनंद है इसमें, फिर बुद्धि जो है वो कोशिश करती है रिजेक्ट करने का, क्या बोल रहा है बिल्कुल। लेकिन अगर आप मन के स्तर पे आपके अंदर में साक्षात्कार हो गया कि इसमें आनंद नहीं है, तो फिर आपको कोई भी गलत इच्छा नहीं है, गलत विचार नहीं है, उसमें समय लगता है। जाते हैं तो सोल को कैरी करके ले जाते हैं।
प्योर इसमें देखिए अलग अलग दृष्टांत आए हैं। जैसे तुकाराम महाराज का आपने सुना होगा, उनको शरीर के सहित लेके चले गए। ध्रुव महाराज के बारे में सुना होगा, उनको शरीर के सहित लेके चले गए। और इसमें आता है, स्क्रिप्चर्स में आता है, भगवान को देखकर जो वॉरियर्स मरे तो उनका आत्मा जो है वैकुंठ में चला गया। इस तरीके से भी आता है। तो जो भी है, चाहे आप शरीर के साथ जा रहे हैं, आत्मा जा रहा है, शरीर के साथ भी जाते हैं। तो जो ये यूनिवर्स की लेयर्स है ना, तो ये 8 लेयर्स हैं, जिसमें 5 महाभूत की लेयर्स है, 3 सटल बॉडी की लेयर्स है। तो आपकी सटल बॉडी, ग्रॉस बॉडी उसमें मिल जाती है। आप इस ब्रह्मांड का कोई भी चीज इस ब्रह्मांड से बाहर लेके नहीं जा सकते। तो सिर्फ एक आत्मा इस ब्रह्मांड की नहीं है, तो आत्मा बाहर चली जाएगी। और आप आत्मा ही हो, वही आत्मा आपका रूप है। तो वहीं पर उस आत्मा के रूप में आप रहते हो। हाँ, सटल लेयर्स में मिल जाते हैं से। शरीर के साथ जा रहे हैं, खत्म हो रहा है शरीर। अरे जब सेल्फ लाइज हो जाएंगे तभी तो जाएंगे। जैसे मानो आप ये करताल लेके जा रहे हैं, अब वहाँ जो बाउंड्री क्रॉस करे तो बोले ये करताल दे दो, ये तो हमारी है, आप अध्यात्मिक जगत में क्यों लेके जा रहे हो? तो मैं क्या बोलूँगा, ले लो भैया। वैसे आप शरीर बोलोगे भैया ले लो। और जब आपको इतना दिव्य अपना रूप मिल रहा है, फिर सड़े हुए शरीर को लेके क्या करोगे? दर्द क्यों? वही मैं बताया ना, जैसे करताल है, आपको देने में दर्द होगा? नहीं होगा, आपको पता है मुझसे अलग है। तो ऐसे उनको पता है शरीर मुझसे अलग है, कोई दर्द नहीं होगा। ठीक है, आप जाइए पहले वहाँ पर। जैसे वो डायरेक्ट शरीर के साथ नहीं है ना, आप बता रहे हैं कि वो जैसे उसके पार जाएंगे तो शरीर मतलब वो कुछ नहीं होता है, वो होगा फट जाए नहीं फटेगा नहीं, बिना दर्द के वो हो जाएगा। या आपके लिए भगवान को बोल देंगे कि आपका आत्मा यहीं से शरीर से नहीं छोड़ दिया, ठीक है? तो फिर आपका आत्मा यहाँ से लेके जाएंगे। ये जो धर्म अर्थ काम मोक्ष बताया गया है, उसमें काम रिकमेंडेड है, लेकिन इसमें हम देखते हैं कि काम का कोई लिमिट ही नहीं है, वो एंड ही नहीं होता। तो कैसे वो रिकमेंडेड है, उसको कैसे समझें? जो वैदिक समय था, जिसमें वेदास जो है वो मुख्य हमारे शास्त्र थे, तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो लोग धर्म को छोड़ते नहीं थे। जैसे वैदिक कल्चर में आप देखोगे तो लोग सारे रिचुअल्स फॉलो करते थे, है ना, सारे संस्कार फॉलो करते थे, रिचुअल्स फॉलो करते थे, धर्म की नीतियों के अनुसार कार्य करते थे। तो उस धर्म के आधार पर उनको अर्थ आता था। लेकिन भौतिक इच्छाएं तो थी, भले धर्म फॉलो करते थे, लेकिन भौतिक इच्छाएं थी भोग करने की। तो जब धर्म के आधार पर अर्थ आता था, तो धर्म के आधार पर ही वो काम करते थे। जैसे विवाह कर लिया धर्म के आधार पर, या जो भी है, और अलग अलग प्रकार की इंजॉयमेंट है धर्म के आधार पर करते थे। क्योंकि वो धर्म के आधार पर करते थे, तो उनको उस काम से साक्षात्कार मिलता था कि इसमें आनंद नहीं है, और फिर जो है मोक्ष की तरफ वो आगे बढ़ जाते थे, अग्रसर हो जाते थे। लेकिन ये नारदमुनि और दक्ष वाले सेक्शन में आता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कलियुग में जो है लोग काम तक आ भी जाए तो वहीं अटक जाएंगे, मोक्ष के लिए कोई नहीं जा पाता है ऐसा, क्योंकि कलियुग में उतना धर्म बचा नहीं है। और धर्म के अनुसार अर्थ कमाना, धर्म के अनुसार काम करना, धर्म के अनुसार जीवन निर्वाह करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कलियुग में उस तरीके का हमारा विवेक बुद्धि नहीं है। अब देखो कलियुग में कहाँ कौन कितना धर्म करता है। गोरखपुर बताया था, IIT बॉम्बे में उनका कोई फेस्ट था, तो उससे पहले वो सरस्वती पूजा करना चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि किसको बुलाएं, किसको बुलाएं? तो एक ब्राह्मण लड़का था, तो उसको बोला आजा सरस्वती पूजा कर। तो मैं देखो 5 मिनट में सब खत्म कर देना, उसके बाद हमारा सब चालू होने वाला है। तो 5 मिनट में किया, उसके बाद तो चला जा, फिर डांस चालू कर दिया। अभी देखो हमारे धार्मिक कार्य कैसे हो गए, दे आर इन्फ्यूज्ड विद सेंस ग्रेटिफिकेशन। धर्मान जो है that is supposed to infuse our sense gratificatory activities, but उल्टा हो गया। अभी होली है, दीपावली है, कोई भी त्योहार है, उसमें क्या हो गया है धार्मिक, लेकिन सब में सेंस ग्रेटिफिकेशन, सब में बॉलीवुड म्यूजिक बजता है, अब सब में अल्कोहल ड्रिंक होता है, और ये जो दाड़िया डांस होता है ना, लकड़ी से करते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो आजकल जो भारत में इनका मैं लेक्चर सुना था, मोहन रूप हुआ, तो वो बता रहे थे आजकल जो फेस्टिवल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा इलिसिट रिलेशनशिप्स होते हैं।
जैसे मैरिज है इतना प्योर है, लेकिन मैरिज में भी इतना ज्यादा गंदगी हो गया है कि बहुत गलत गलत चीजें चालू हो गई। तभी आप देखिए धर्म बचा का, तो आज के समय में तो बहुत मुश्किल है। और मानो अगर धर्म अर्थ काम अगर अच्छी तरीके से हम फॉलो करके जा भी रहे हैं, तो उतना हमारे अंदर विवेक बुद्धि नहीं है कि हम काम को करते हुए साक्षात्कार पा लेंगे। दूसरा, हमारे पास उतना समय नहीं है काम को देने के लिए कि हम मोक्ष के लिए इंतजार करें और साक्षात्कार का इंतजार करें। आपका जिंदगी 60 साल का है, 25 साल तक तो नौकरी लगता है, फिर आप धर्म अर्थ काम करोगे, तब तक आपको साक्षात्कार होगा कि काम में कुछ है नहीं, तब तक आपका समय चला जाएगा, बूढ़े हो जाओगे, तो कब मोक्ष के लिए करोगे? पहले जमाने में क्या है, 1 लाख साल है आपका, 10,000 काम किया, काम के लिए काम करते रहे, फिर साक्षात्कार हो गया तो चलो अंतिम के 40,000 साल बचे। कलियुग में तो समय का है, करेक्ट ना? इसलिए प्रभुपाद जी कलियुग में कोई मार्ग के लिए कुछ नहीं बताते। भक्ति करो, भक्ति एक पॉसिबल मार्ग है, भक्ति एक है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। कलियुग में कुछ भी करने के लिए समय नहीं बचा है। अभी जो जीएस क्लास था उसमें मैंने सबसे सवाल पूछा था कि आप लोगों को कितनों को लगता है कि आप लोग 80 साल तक जिएंगे? तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। मैं बोला 70 साल तक जिएंगे, तब भी किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। तो मैं बोला फिर आप लोगों को क्या लगता है कितने साल जियोगे? तो 4 भक्तों ने हाथ खड़ा किया कि मुझे लगता है 65 साल तक हम जिए। मैंने पूछा बाकियों को, तो बाकी सब बोले 60 साल। तो फिर मैं बोला आप लोग कुछ सोचो ही मत, जल्दी से ज्वाइन कर लो, टाइम ही नहीं बचा है आप लोगों को। 25 साल के तो हो गए और 60 साल में आप बोल रहे हो मर जाओगे, यानी कि 50 साल में बूढ़े हो जाओगे, तो 25 साल ही बचा। कलियुग में समय कहाँ बचा है? इसलिए भक्ति जो है एकमात्र सहारा है, एकमात्र होगा। ठीक है।